हेलो एंड वेलकम टू दिस एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन। और आज के हमारे खास मेहमान को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। जी हाँ, मैं बात करती हूँ मिस्टर निखिल कामत की, को-फाउंडर एंड सीईओ है ज़ीरोधा के। वेलकम टू द शो निखिल एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। Thank you, Gitu. Lovely meeting. प्लेजर सर। निखिल, हम हमेशा इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं और आप इंस्पिरेशन है इन लाखों करोड़ों हमारे इंडियन सिटीजन्स की, जो कुछ अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और आपको देखते हैं एज अ आइडल। who inspired you in your journey reaching this you become a so successful person, so who has been your inspiration? I think many people, Gitu. So I derive मुझे ज़्यादा inspiration जो लोग अभी नहीं हैं उनसे आती है, ना कि जो लोगों से मैं मिल चुका हूँ. It's a little bit strange to say that, but it's easier to get inspired by people you can never meet, and you read about them in books. So there have been many people like that, and ऐसा नहीं है कि I got inspired to be in business and because of that something changed. A large part of why we are successful or what scale any of our companies have achieved, I spend more time on the investment part, but why everything has reached a certain scale is effort of the many people behind it who typically don't do interviews. It's a factor of the market, the cycle, the timing, luck, all of these things. तो मैं इन चीजों से ज्यादा इंस्पिरेशन लेता हूँ more than a third person per se. देखिए, बहुत छोटी सी उम्र में आपने स्टॉक मार्केट की तरफ रुख किया। क्यों इंटरेस्ट जागा आपका स्टॉक मार्केट? I was 17 actually when I first started trading and investing. Abhi at 36, I've been doing exactly the same job I've been doing today, same time in the morning to evening for the last 19 years. So I've been at it for a long time, but initially interest शायद इसलिए आया कि it was some childhood fantasy to become financially secure very fast. Okay. And stock markets are one of those places where the learning curve is large, but you do not need too many prerequisites. Like you do not need a certain degree, a certain kind of resume to apply for a job, all of which I didn't have. So it was one of the only avenues available where I could start off from zero and in a way have a level playing field with people who have been there and are more experienced than I. What exactly is your USP? मैंने तो कुछ गिना दी है, लेकिन अगर हम देखें तो मैं खुद स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई बहुत सालों से हूँ, 25 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस रखती हूँ शेयर बाजार से। बहुत सारे ब्रोकिंग हाउसेस हैं जो काम कर रहे थे, लेकिन आप आए, so you have disrupted this entire broking industry. और डिस्ट्रप्शन इसलिए क्योंकि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जो काफी इजी था लोगों का इस्तेमाल करने के लिए, और बहुत बेनिफिट्स भी आपने रिटेल इन्वेस्टर्स को दिए। तो कितना चैलेंजिंग रहा अभी तक का सफर? और now many of the companies, many of the broking houses I know personally, they have been trying to compete with you or नए products. Every week they have new product offering for the retail investors now. So challenges जो आपने face किए और challenges जो आपके लिए आगे? मैं ज़्यादा investment पे focus करता हूँ, but at Zerodha when we began, I think cost was our big USP, and with time technology has become our big USP, in large part due to some amazing technology people we've kind of been lucky enough to associate with along the way. So I would say in combination, cost, efficiency, technology, reputation, building community, all of these have worked for Zerodha. और जो आपके साथ कंपटीशन में आगे आना चाह रहे हैं उनके लिए कितना तैयार हैं आप? It would be futile, it would be silly of me to say that we are prepared for them, because once we were the small guy, जब भी innovation होता है, it will likely come from another small guy.
I think the preparation is in a way to have the humility to accept when that happens with some kind of dignity, because we will be disrupted someday and it will likely be from some small guy from somewhere, much like how we were one day at one point of time. निखिल, आपने हाल ही में यंग इंडियन फिलैंथ्रोपी प्लेज के नाम से शुरू किया है। यहाँ पे बिलियनर्स जो है वो अपनी 25% जो वेल्थ है उसको प्लेज करते हैं फॉर फिलैंथ्रोपी। इसकी शुरुआत आपने क्यों की? इससे आप क्या अचीव करना चाहते हैं? बैंगलोर में स्पेशली ऐसे बहुत लोग हैं जो टेक्नोलॉजी की वजह से काफी कम टाइम में बहुत स्केल अचीव कर चुके हैं। And rightfully, we should all help out in the communities which have made our success possible. तो मैं अपने दोस्तों के साथ ये प्लान जब हमने बनाया था 2 साल पहले, ये कुछ फॉर्मल नहीं था. It was more out of gratitude कि this ecosystem has given us so much. We need to give back and allow other people the opportunity. तो इस thought के साथ ये शुरू किया था. And it has been close to 2 years now. We did a really large project in Bangalore, in Karnataka, around government middle schools and high schools. And now we are planning to take it to other states and scale up the model. But it's been a very interesting and very giving journey so far for YIB. How open have the people been to really participate in this kind of pledge? I think each one inspires another. जैसे कि आपको अगर सुनने में आया कि आपके किसी दोस्त ने join किया है, the likelihood of you doing it would be higher. And like that, through word of mouth, it's doing well. And because of the people in the group, it has become a coveted thing where a lot of people want to join, but we are very careful about the kind of people we bring into the group so we can ensure people are there for the right reasons. I think this is not a typical charity. जैसे कि हम लोग कोई, there's no cost of running the charity. This is a bunch of friends deciding where to give money together. We don't collect any money. We are not a registered NGO. अगर कोई हमें बोल भी दे कि I have so much money, can you help me give it to charity? We will ideate with them and trying to figure out where we are giving, if they can join and give directly there. But we're not a traditional charity. So we're very careful about who we allow into the group and the kind of support we provide to the people in the group. निखिल, आपकी जीरोधा के साथ साथ और भी अन्य कंपनियां जो है आपने एस्टैब्लिश की है, आप फाउंडर हैं उन कंपनीज के जो स्टार्टअप्स में भी निवेश करती हैं और जहाँ पे भी फंड की जरूरत होती है वहां पे भी निवेश करती है। इन कंपनीज के बारे में बताइए, अभी तक जिन जिन कंपनीज में आपने निवेश किया है, क्या आप खुश हैं? और आप जब निवेश करते हैं किसी भी स्टार्टअप में तो क्या क्या क्राइटेरिया लेके आप उनको शॉर्टलिस्ट करते हैं? So management quality is a big thing. The quality of the founders, then the sector is a big thing. वो किस सेक्टर में क्या बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टार्टअप इन्वेस्टिंग में the odds of success are very low. तो अगर आप 10 कंपनीज में इन्वेस्ट करें तो शायद 1 या 2 उनमें significantly scale करती है. Usually that's the playbook. But the key is those 2 companies have to make up for the loss in investment in the other area. So very often the advice I give people looking to invest in startups is, if you're only going to do 1 or 2 investments, it would probably never make sense. But if you're willing to build a portfolio of 10 or 20 companies, only then should you attempt. अगर हम अपने स्टॉक मार्केट की ही बात करते हैं, साल 2020 में जब we were hit by कोविड क्राइसिस, उस 2 साल में 2020-2021 में स्टॉक मार्केट ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। हम अपने बाजार की बात नहीं करेंगे, हम ग्लोबली भी मार्केट्स की बात करें तो वहां पे भी काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। डीमैट अकाउंट्स की संख्या काफी बढ़ी क्योंकि घरों में लोग बंद थे, लॉकडाउन थे, उसके चलते हुए इंटरेस्ट जो है स्टॉक मार्केट की तरफ ज्यादा जनरेट हुआ। लेकिन उसके बाद हम 1-1.5 साल से देख रहे हैं कि रिटेल इज स्लोली एज द इकोनॉमी में अनलॉकिंग हमको देखने को मिली,
तो दे आर शाइंग अवे फ्रॉम द मार्केट्स। हालांकि डीमैट अकाउंट की संख्या उतनी ही होगी, लेकिन एक्टिव अकाउंट्स बहुत कम हो गए होंगे। एक बार फिर हम रिकवरी देख रहे हैं निखिल मार्केट्स में, एंड नाउ वी आर बैक टुवर्ड्स आवर रिकॉर्ड हाइस, वी आर a few percentage points away। क्या रिटेल की पार्टिसिपेशन जो थोड़ी देर के लिए धीमी पड़ गई थी, एक बार फिर वापस आना शुरू हुई है? I don't think so. मेरे ख्याल से अभी भी थोड़ी लो है considering where the market is. But स्टॉक मार्केट्स में एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है, जैसे कि जब मार्केट रिकवर होके फिर से 18,300 200 पे आ गया है, the fact that people have not made money for the time that it has languished in this range, शायद कुछ लोगों को अपील नहीं कर रहा है, but from the longer term objective of increasing participation in the market, I think we're still on track and the numbers will continue to improve. The number of people participating in equity markets as long-term investors, but in the short term अभी भी थोड़ा कम। और महिलाओं की संख्या, अगर हम रेशो देखें, मेल टू फीमेल रेशो, व्हाट इज द रेशो लाइक? आई मीन, I have been interacting with many of the females who seem to be very interested in getting into stock markets. तो ये संख्या, क्या आप इस रेशो में बदलाव देख रहे हैं? क्या लग रहा है आपको अवेयरनेस बढ़ रही है महिलाओं के बीच भी इन्वेस्टमेंट? I think it would be close to 20%, between 15 to 20%. ये, I think it is a depiction of women participation in the workforce as well. But as a country, as we develop and we grow, I think women participation in the workforce will go up. In turn, the number of taxpayers who are women will go up. And then in turn, the participation in stock market will go up. So I think we are the tail end of this ecosystem and we are not the funnel which brings people in. But मेरे ख्याल से ये होगा, India is doing so many things correctly that I think it will happen and this ratio will increase as well. अच्छा, ये बताइए कि आप मार्केट्स को यहाँ से कहाँ जाते देखते हैं? बिकॉज we are now talking about a $50 trillion economy by 2050, 2030 we will be $7 trillion economy। तो उसके रफ्तार को देखते हुए आपको क्या लगता है कि हमारे शेयर बाजार यहाँ से कैसा प्रदर्शन करें? Internationally, there is a lot of slowdown happening. Inflation is a problem. Interest rate cycles are a problem. To where we sit today, I would say is a little bit expensive, considering all those factors. So, are you expecting a bit of correction from the current levels? These things can never be, predicted. Like as we speak, FIIs have put in 10,000, 11,000 crores in this month. There are so many moving factors that I believe nobody can predict kal kya hoga. But if you compare to history, where we are as a multiple of earnings is a little bit expensive. How optimistic are you on the India growth story? I am optimistic, not because I'm Indian in isolation and it's patriotism speaking, but if you talk to investors across the world, I think they are also optimistic about India and they see us as the only place to be sanguine about in a world which has a lot more turmoil at its hands. So for many reasons, I'm optimistic about it. आपने रिसेंटली एक पॉडकास्ट भी लॉन्च किया जहाँ पे आप बड़े बड़े लीडिंग बिजनेसमैन को बुलाते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, तो क्या सीखने को मिलता है आपको इन सब के इंटरव्यूज के बाद? हाउ डू यू गेट इंस्पायर्ड? For me, it's like going to college, right? Like every month I do one, and I call experts from a certain industry. And learning from them is like the best version of college for me. I didn't go to college myself, so this is like me overcompensating later in life. अच्छा, ये बताइए कि आप जो न्यू पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी है आपकी या फिर आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है, आप उसमें क्या बदलाव कर रहे हैं आने वाले समय में? मैं अपना गोल्ड एलोकेशन बढ़ा रहा हूँ, फिक्स्ड इनकम बढ़ा रहा हूँ. I think there's a lot of fixed income products right now which are giving decent returns, beating inflation. Equity is about 40%. And I think for now that will be how it is. चलिए निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बातचीत करने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम.